દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસને મળી મોટી સફળતા। પોલીસ અમદાવાદ ખાતેથી ગેરકાયદેસર આલ્કોહોલ યુક્ત આયુર્વેદિક પીણાની ફેક્ટરી ઝડપી પાડી હતી। ફેક્ટરીમાંથી માલિક સહિત 3 શખ્સોની અટકાયત કરીને ₹21.12 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। ખંભાળિયા શહેરમાંથી આશરે 10 દિવસ પૂર્વે પકડાયેલી આયુર્વેદિક સિરપની બોટલોમાં આલ્કોહોલનું પ્રમાણ હોવાની આશંકા સામે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ બાદ આ પ્રકરણમાં અમદાવાદમાં એક શખ્સ દ્વારા ચાંગોદરમાં ઊભી કરવામાં આવેલી ફેક્ટરીમાં આલ્કોહોલ યુક્ત આયુર્વેદિક સિરપની આડમાં ગેરકાયદેસર રીતે આલ્કોહોલ પીણાનું ઉત્પાદન તેમજ વેચાણ થતું હતું। ત્યારે આ સમગ્ર પ્રકરણ અંગેની વાત કરીએ તો દેવભૂમિ દ્વારકા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગત મુજબ ખંભાળિયાના જોધપુર ગેટ વિસ્તારમાં ગત તારીખ 26 જુલાઈના રોજ પાર્ક કરાયેલા આઈસર ટ્રકમાં પોલીસે ચેકિંગ કરતા આ ટ્રકમાંથી સેલ્ફ જનરેટેડ આલ્કોહોલ યુક્ત કાલ મેઘસ્વા નામની સિરપની 4000 બોટલ મળી આવી હતી। જે અંગે પોલીસને શંકા જતા ₹5.96 લાખની સિરપ તથા 3 લાખનો ટ્રક મળી કુલ ₹8.96 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે અને આ સુયોજિત કાવતરું રચી ખોટા દસ્તાવેજ ઉભા કરી આલ્કોહોલ યુક્ત આયુર્વેદિક દવાની આડમાં ગેરકાયદેસર રીતે આલ્કોહોલ યુક્ત પીણાનું વેચાણ કરવા મામલે આઈપીસી કલમ 120B પ્રોહિબિશન એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ખંભાળિયા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો હતો। જો કે આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને મુખ્ય સૂત્રધાર એવા મળતા મૂળ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકાના વતની અને હાલ અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં રહેતા ભરત ચેનાભાઈ નકુમ નામના સતવારા યુવાનની ધરપકડ કરી તેના 4 દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા હતા। સમગ્ર પ્રકરણની ઝીણવટભરી તપાસમાં આરોપી શખ્સ દ્વારા અમદાવાદના ચાંગોદર ખાતે પોતાના કબજાની ફેક્ટરીમાં આલ્કોહોલ યુક્ત પીણું તૈયાર કરી તેને કાલ મેઘસ્વા નામની દવાની આડ ઉત્પાદન તથા વેચાણ કરાતું હોવાનું ખુલ્યું હતું। પોલીસે ફેક્ટરીની અંદરથી ₹12.16 લાખનો 40 થી 50 જેટલી જુદી જુદી ચીજ વસ્તુઓનો મુદ્દામાલ કબજે કરી લેવામાં આવ્યો હતો। જેમાં ખાસ કરીને 840 લીટર જેટલો ઇથેનોલનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો। ત્યારે આરોપીઓએ પોલીસને જણાવ્યા મુજબ આલ્કોહોલ યુક્ત આયુર્વેદિક પીણું તૈયાર કરવા માટે તેના દ્વારા ઇથેનોલ કેમિકલ સિટ્રિક એસિડ સ્વીટનર ફ્લેવરને પાણીમાં ભેળવીને તૈયાર કરાતો હોવાનું અને તેના દ્વારા આ સેલ્ફ જનરેટેડ આલ્કોહોલ યુક્ત આયુર્વેદિક દવા સ્થાનિક મશીનરી મારફતે બોટલિંગ કરી તેનું સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર પ્રકારના બિલો બનાવી અને માર્કેટિંગ તથા વેચાણ કરવામાં આવતું હતું। તેમજ સિરપના વેચાણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા બિલમાં જીએસટી નંબર પણ ખોટા હોવાનું ખુલ્યું હતું। આ પ્રકરણમાં મુખ્ય આરોપી ભરત ચેનાભાઈ નકુમ રહેવાસી વસ્ત્રાલપુર અમદાવાદ સાથે ખંભાળિયામાં રહેતા વેપારી ચિરાગ લીલાધરભાઈ થોભાણી અને અમદાવાદના રમેશ ભોપાભાઈ ખરગિયા નામના શખ્સોની અટકાયત કરવામાં આવી છે। સમગ્ર મુદ્દે પોલીસે કુલ ₹10,84,273ની કિંમતની 7,273 બોટલ નશાયુક્ત પીણું, ₹84,000ની કિંમતનું 840 લીટર ઇથેનોલ કેમિકલ, ₹1 લાખની કિંમતનું 1000 લીટર તૈયાર મિશ્રણ, ₹74,760ની કિંમતના અન્ય રો મટીરિયલ તેમજ ₹5.89 લાખની કિંમતના લેપટોપ, ગેસ સિલિન્ડર વગેરે મુદ્દામાલ સાથે ₹3 લાખની કિંમતનો આઈસર ટ્રક મળી કુલ ₹21,12,270નો મુદ્દામાલ કબજે કરી લેવામાં આવ્યો છે। આ સમગ્ર પ્રકરણમાં પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। हमारे माननीय एचएम साहब की जो एक सूचना वारंवार रहती है कि गुजरात में जो नशाबंदी का कायदा है उसका कड़काई से पालन हो, उसी के भाग रूप जो है जिला की जो पुलिस है वो भी इसमें समय सर इसके लिए ट्राई करती रहती है। इसी के भाग रूप हमारी एक एलसीबी की टीम जिसमें पीएसआई दे मुरारी थे और एलसीबी का स्टाफ गत 26/7/2023 को नाइट पेट्रोलिंग के दरमियान एक शंकास्पद आइसर मिली थी और आइसर में से 4000 जितनी जो है आयुर्वेदिक बोतलें मिली थी जिनको सीज किया। ये जो माल है ये एक स्थानिक चिराग भाई थोभाणी करके है जो कि माल भरत भाई नकुम से माल ये मंगवाता था खंभालिया और आसपास के एरिया में इसका वितरण करने के लिए। इसमें हमने फिर जानवाजोग दाखिल की। साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए हमने सैम्पलिंग लेके मुद्दा माल का हमने एफएसएल भेजा और जो संबंधित अलग अलग जो कचहरियां हैं जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया
उसके आधार पे पता लगा कि इन्होंने बेसिकली ये जो आयात निकास कर रहे थे वो बोगस बिल के आधार पे कर रहे थे, क्योंकि वो जीएसटी नंबर जो उन्होंने दिया वो है नहीं। बिना जो नेसेसरी जो परवानगी है उसके बिना ये लोग ये सारी प्रक्रिया कर रहे थे और ये आयात निकास उसके बिना कर रहे थे। इसी के आधार पे हमने 3 दिन पहले जो है आईपीसी की फॉर्जरी की अलग अलग कलमें, जैसे कि 465 और प्रोहिबिशन एक्ट के अलग अलग कलमों के तहत एक गुना दाखिल किया, जिसकी जो तपास है खंभालिया थाना इंचार्ज जोशी कर रहे हैं। उसमें हमने 3 आरोपियों का अब तक अटक किया है। मेन आरोपी भरत भाई नकुम का हमने 4 दिन का रिमांड लेके हमने इनकी जो 2 फैक्ट्रियां थी अहमदाबाद में चांगोदर बाजू, उन पे रेड की और फिर वहां से हमने जो पूरी फैक्ट्री में जो मशीन है जो कि और भी वहाँ लगभग 3000 जितनी हमें बोटल्स मिली और बाकी जो रॉ मटेरियल जिससे ये लोग ये आयुर्वेदिक मटेरियल बनाते थे वो हमने कब्जा किया। अब तक टोटल मुद्दा माल की जो वैल्यू है वो 25 लाख जितनी होती है। इसमें सिर्फ बोटल्स की कीमत 10,50,000 और मशीनरी की जो वैल्यू है वो जो है 4 लाख जितनी होती है। ये एक टिपिकल जो इनका मशीन था, वो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल मॉडर्न डे मशीन है। इसके बारे में मैं भी आपको आगे डिटेल्स दूंगा। आपको पहले डिटेल्स देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी जो है ये आयुर्वेदिक बियर जो होता है उसके बारे में देना चाहूँगा। आयुर्वेदिक बियर का जो लेबल होगा बोतल का जनरली ये होता है और इसमें अलग अलग औषधियाँ ऊपर लिखी हुई रहती हैं। इसमें नीचे लिखा रहता है कि इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो कि 11% से ज़्यादा नहीं है, इतना है। अब आयुर्वेदिक जो अल्कोहल जो है, ये आयुर्वेदिक बियर जो है वो आयुर्वेदिक जो पद्धति होती है असर्वा और अरिष्टा, उसके मार्फत अलग अलग जड़ी बूटियों को एक पूरे टेक्निकल प्रक्रिया के हिसाब से मिलाया जाता है और उसमें जो अल्कोहल है अंदर से ही जनरेट होता है, उसी प्रक्रिया में जनरेट होता है और जो कायदे के हिसाब से 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और फिर जो है इसको आयुर्वेदिक के हिसाब से अलग अलग जो रोग हैं उनके इलाज में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है, बट ये जो पूरी गैंग थी, सिंडिकेट जो है, वो बिल्कुल एक मॉडर्न प्रोसेस में जो मशीनरी को यूज़ करके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें मेन एथेनॉल, पानी, सिट्रस एसिड, आर्टिफिशियल स्वीट और अलग अलग फ्लेवर्स को मिला के ये लोग ये प्रक्रिया में आयुर्वेदिक बियर बनाते हैं। ये बिल्कुल जो आयुर्वेदिक की जो पद्धति है उसका मिसयूज है और जो हमारे लॉज हैं उसका मिसयूज है। इसमें फूड एंड ड्रग की जैसे 25D फॉर्म चाहिए होता है, आबकारी विभाग का SA1 SA2 लाइसेंस चाहिए होता है, वो इनके पास नहीं है। एक रजिस्टर्ड पेड़ी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और ये लोग जो हैं इतना एक इंश्योर करते हैं कि एक बोतल में 10% से ज़्यादा अल्कोहल ना हो ताकि कायदे का कहीं भी भंग ना हो। ये अल्कोहल बाहर से मिलाया जाता है, बट जो कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है उसमें अंदर से ही उसकी प्रोसेस से ही अल्कोहल जनरेट होगी। हमने लगभग इसमें 840 लीटर जितना एथेनॉल पकड़ा। उसके आधार पे ये लोग जो है 17,000 जितनी जो है और बोतलें बना सकते थे, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 26 लाख जितनी होती। इसका जो मेन आरोपी है वो भरत भाई नकुम है, जो खुद एक एमटेक है अहमदाबाद से और पिछले 6 सालों से ये धंधा कर रहे हैं। उन्होंने इस धंधा में जो संकड़ाला बाकी लोग और इंटरनेट के मार्फत जो है ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है और कैसे इसको बनाया जा सकता है वो सीखा। और ये लोग क्या करते हैं, ये आदमी जो है ये सौराष्ट्र, कच्छ और अहमदाबाद बाजू ये माल का वितरण करता था। ये लोग अपने कोई लोकल सप्लायर होता है उसको माल बेचते हैं और जो फिर लोकल सप्लायर है वो इसको अलग अलग पान गल्ला पे बेचते हैं। आजकल इसका अब्यूज़ बढ़ रहा है। हमारे इतना भी ध्यान पे है कि पिछले कुछ सालों में ये पीकर एक्सीडेंट्स भी हुए। तो इस हिसाब से हमने ये जो कार्रवाई है की है और इसमें आगे की तपास चल रही है। BS9 TV न्यूज़ સાથે જયસુખ મોદી જામ ખંભાળિયા।